भैया बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। The national capital woke up to earthquake tremors early today. At 5:36 a.m. on Monday, Delhi and the surrounding areas were shaken by strong tremors as a 4.0 magnitude earthquake hit the region. The quake was felt across the city, waking up many residents with a sudden jolt. The National Capital for Seismology confirmed that the epicenter was located within Delhi itself, just 5 kilometers beneath the surface. Shallow earthquakes like this one tend to be more intense and cause more noticeable shaking compared to those that happen deeper underground. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to stay calm, follow safety precautions, and remain alert for potential aftershocks. He assured that authorities were closely monitoring the situation. Former Delhi CM and Aam Aadmi Party leader Atishi also expressed concern on social media platform X. जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम दो सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, कि हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब फिर हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड। बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। भैया बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। होते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। आज से पहले कभी इतना को महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। Delhi is no stranger to earthquakes. The city falls in Zone 4 of India's seismic classification, which is one of the most active regions in the country. This makes it more prone to quakes, although it hasn't seen anything above a 5.0 magnitude in the past decade. In fact, the last big one was in 2012 and in 2022, where a 4.1 magnitude earthquake hit nearby Haryana, but it didn't cause any damage. Even though Delhi hasn't had any major quakes lately, the region still feels tremors from distant earthquakes. These can come from places as far as the Himalayas, Afghanistan, or even China. Earthquakes that originate deep inside the earth, which is about 100 kilometers or more below the surface, can travel long distances. But farther they travel, the weaker they get, meaning they don't cause as much damage by the time they reach Delhi. While Monday's tremors didn't cause any harm, it's a reminder that Delhi sits in a seismic zone and could experience more quakes in the future. Authorities are keeping an eye on the situation, and residents are advised to stay prepared and know what to do if bigger tremors hit.